अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा। और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಬಾಬಾ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುಪಿಯ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಬಾಬಾ ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಿ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾದ ಅಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಜೆಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೂಂಡಾಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಮುರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಪಿಯ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಯು ಪಿಯ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಗಿ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಇದೇ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಯು ಪಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗೂಂಡಾ ರಾಜ್ಯ, ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದೇ RJD ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ಇದರ ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರರು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು RJD. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ UP ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದರೆ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಗೂಂಡಾಗಳ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಮುರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೌಡಿಸಮನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ NDA ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ NDA ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಮೋದಿ ನಿತೀಶ್ ಜೋಡಿಯ ಮೋಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ನಿತೀಶ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಬಿಹಾರ್ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈಗೆ, RJD ಕೈಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದು ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೂಂಡಾಗಳ ಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಗಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗೆ ಬಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ RJDಗೆ. ಯೋಗಿಯ ಭಾಷಣಕ್ಕಂತೂ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ BJPಯ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಯೋಗಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹಾತ್ ಅಂದರೆ ಯೋಗಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸಾಥ್, ಹಾಗೆ ಯೋಗಿಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣದ ಭರ್ಜರಿ ಝಲಕ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो और जिस बिहार ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया हो, आखिर वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और RJD बराबर के दोषी हैं। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार का उपयोग तो किया, लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार की मेधा और बिहार की प्रतिभा और यहां की ऊर्जा का उपयोग बिहार के विकास में नहीं होने दिया। बिहार का नौजवान मेहनत करता था, उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया मानती है, लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती तो कांग्रेस और RJD के लोगों की दलाली इस नौजवान की मेधा को कुंद कर देती थी। हताश और निराश बिहार का प्रतिभा, यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया था। पिछले 20 वर्ष में NDA की सरकार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। और बहनों और भाइयों, इसी सुशासन की सुदृढ़ नींव में एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण के लिए NDA सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है। और इसी के लिए आज मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज बिहार में वो सब कुछ है जो बिहार की
समृद्ध और विकसित बिहार बनाने में सहायक हो सकती है। रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की सुविधा है। और बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है। आप याद करिए, एनआईटी है, आईआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है और बिहार के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस की भी एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, खुल रहे हैं, निवेश आ रहा है और निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा। और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता है ना, धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है। और तभी तो यूपी का माफिया और अपराधी हुआ है पस्त और नौजवान को रोजगार मिला है तो वह हुआ है मस्त।